Welcome to online teaching of Rajanpur block, Sundargarh, Odisha. Good morning, students. Last class I have discussed about the nouns. I have completed about the nouns and kinds of nouns. आम गत क्लास कौन करते नाउन संपर्क में आम डिस्कसन करते केते प्रकार नाउन कौन से विषय डिस्कस करते नाउ टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट ए न्यू चैप्टर दैट इज योर आर्टिकल आज आम गोटे नूतन विषय आर्टिकल विषय पढ़ा जाते इन इंग्लिश ग्रामर ए and the a and the these three words a and the in English grammar a and the these are called the articles. These are called articles. A and एगुड़िक आम इंग्लिश ग्रामर रे ए आन आउ दी को आर्टिकल कहला आ देखिबा मान काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स आम आर्टिकल केते प्रकार इन इंग्लिश ग्रामर बेसिकली articles are two kinds. In English grammar, basically articles are two kinds. First is your indefinite article. Indefinite article. Second is your definite article. Definite article. Okay. In English grammar there are two kinds of articles. आम इंग्लिश ग्रामर दुई प्रकार आर्टिकल अच्छी. फर्स्ट इज योर इंडेफिनाइट आर्टिकल, सेकेंड डेफिनाइट. आम केते प्रकार आर्टिकल अच्छी दुई प्रकार, गोटे है इंडेफिनाइट आर्टिकल आउ गोटे डेफिनाइट आर्टिकल. देन आई फर्स्ट कम टू व्हाट इज द इंडेफिनाइट आर्टिकल. व्हाट इज इंडेफिनाइट आर्टिकल? Indefinite article. Indefinite article. हम indefinite article का पढ़ते हैं. Indefinite article हम कौन चला article को लाम तीन टावर a and the. In these three words only a and the, a and these two are called indefinite article. A and an are called indefinite article. Actually a और an का indefinite article बोले कहा जाए. कारण why a and an are called indefinite article because it is used when we do not speak of any particular or definite person or thing. Okay, a and an are called indefinite article because it is used when we do not speak of any definite or any particular person or thing. a and को indefinite article को यही दृष्टि कहा जाए कारण आम एटा व्यवहार करा जाए कोई क्षेत्र में जदि आम कौन सी गोटे पर्टिकुलर व्यक्ति निर्दिष्ट व्यक्ति और निर्दिष्ट वस्तु पूर्व आम यहाँ बसाऊ ना. इट इज नॉट यूज्ड इन डेफिनाइट थिंग और पर्टिकुलर थिंग और डेफिनाइट पर्सन और पर्टिकुलर पर्सन. सो इट इज कॉल्ड द इंडेफिनाइट आर्टिकल. ओके, इंडेफिनाइट आर्टिकल ए एंड दीज आर टू कॉल्ड इंडेफिनाइट आर्टिकल. दैट मीन्स सपोज फॉर एग्जांपल मुझे कहबी I saw a boy in the market. I saw a boy in the market. मु मार्केट रे गोटे पिला को देखिली.
I saw a boy. A is the article. A is an article. I saw a boy. ମୁଁ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ମାର୍କେଟରେ ଦେଖିଲି। ପିଲାକୁ ମାର୍କେଟ ଦେଖିଲେ କେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପିଲା ମୁଁ ଜାଣିନି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଡେଫିନେଟ୍ ବୟ ଅର୍ ପର୍ଟିକୁଲାର ବୟ। ଆମକୁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବାଳକ କଥା କହି ନାହିଁ। ସୋ ଏ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍, ଏ ଇଜ୍ ଦ ବୟ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦ ପର୍ଟିକୁଲାର ବୟ ଅର୍ ଦ ପର୍ଟିକୁଲାର ବୟ। So a is used and it is a indefinite article. Next your definite article. Next your definite article. What is definite article? The definite article is your the. The is your definite article. The का हम definite article बोलते हैं। Because कहीं हम definite article कह रहे हैं? The is called definite article because it is used when you speak of some definite or particular person or thing. The is called definite article. The is called definite article because it is used when we speak of a definite or particular person or thing. दी को आम यही दृष्टि डेफिनेट आर्टिकल कहवा कारण आम जिते बड़े कौन से निर्दिष्ट व्यक्ति निर्दिष्ट वस्तु और निर्दिष्टता पूर्व एटा व्यवहार करा जाए। सो इट इज कॉल्ड डेफिनेट आर्टिकल। देन यू नो व्हिच इज द डेफिनेट आर्टिकल एंड व्हिच इज द इंडेफिनेट आर्टिकल। देन वी कम टू रीड द यूज ऑफ आर्टिकल्स। द यूज ऑफ फर्स्ट इंडेफिनेट आर्टिकल। Now I am going to discuss the use of indefinite article. Indefinite article. In this indefinite article, a and an both are the indefinite article. First, I am going to discuss the use of a. Use of a. बर्तमान आमर a र व्यवहार मु करबे जाउछि। Before going to talk the indefinite use of indefinite article, I want to speak of the vowel and consonant. You know, in English alphabet there are 26 letters. In these 26 letters, A, E, I, O, U. These 5 are called vowel. आमर इंग्लिश अल्फाबेट रे इंग्लिश वर्णमाला रे ए ई आई ओ ई को भावेल बा स्वरवर्ण कह जाए। नेक्स्ट 21 कॉल्ड द कॉन्सोनेंट। Then you must know, but you should know a and an both are used before the your singular countable noun. A और an का सबल पाई singular countable noun पूर्व व्यवहार करा जाए। A cow, an ox, singular, that means a and an both are used before singular countable noun. Okay, एटा मन रखिबो ए और आन सबल पाई सिंगुलर काउंटेबल नाउन पूर्व ही व्यवहार करा जाए। और कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन ए इज यूज्ड बिफोर व्हिच सिंगुलर काउंटेबल नाउन इज ए इज यूज्ड एंड बिफोर व्हिच सिंगुलर काउंटेबल नाउन आन इज यूज्ड। फर्स्ट यूज ऑफ ए इज यूज्ड बिफोर द सिंगुलर काउंटेबल नाउन beginning with consonant or consonant sound। जदि आम ए कोड व्यवहार करा जाए कौन सी सिंगुलर काउंटेबल नाउन रो प्रथम अक्षर जदि गोटे कॉन्सोनेंट थाए किंबा उच्चारणगत दृष्टि जदि कॉन्सोनेंट होता है ता पूर्व ए व्यवहार करा जाए। ओके, जदि कौन से गोटे वर्ड और कौन से सिंगुलर काउंटेबल नाउन रो प्रथम अक्षर गोटे कॉन्सोनेंट थाए किंबा कॉन्सोनेंट रो उच्चारण होता है ताको आमर ता पूर्व ए व्यवहार करा जाए। ए इज यूज्ड
before a singular countable noun beginning with the consonant letter or sound of the consonant. For example, a boy. Boy. Boy is a singular countable noun which first word is B, which is the consonant. So A is used. Similarly, I can say a woman. A woman. Woman is the singular countable noun and its first letter is W, which is a consonant. So A is used. That means first thing we know that A is used before the singular countable noun which is beginning with the consonant or consonant sound. Okay. Second, in some cases, though the singular countable noun beginning with a vowel, A is also used. Singular countable noun ର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର କେତେ କ୍ଷେତ୍ରରେ vowel ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମର A ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ? Suppose singular countable noun starting the or beginning the vowel word, vowel letter, but pronounced as the consonant of consonant. Pronounced as the consonant, A is used. For example, a useful thing. That means a useful thing. Any vowel before the singular countable, suppose there is a vowel but pronounced as U. जदि गोटे भावेल थाई जदि यू उच्चारण हुए तेरे ताहा पूर्व ए व्यवहार करा दियो। यू ए यूजफुल एनिमल, यूजफुल थिंग। यू इज ए भावेल and it pronounced as U, so A is U. Similarly, a unit, a European, Here the European is a singular countable noun. The beginning is vowel E, but pronounced as U. European U. As it is pronounced as U, so A is used. Okay, that means any singular countable noun beginning with a vowel but pronounced as U, A is used. Next, suppose O is used. O is any singular countable noun beginning with O but pronounced as wa. जदि गोटे सिंगुलर काउंटेबल नाउन रो प्रथम अक्षर ओ थाई जदि वा उच्चारण हेले ता पूर्व ए व्यवहार करते ए इज वा प्रोनाउंस एज वा। सपोज एग्जांपल ए वन आयड मैन, एकाखिया ए वन आयड मैन, ए 1 rupee note, one eyed man, one wo is used. Wo is a vowel but pronounced as wa, so A is used. Then it is the use of A. Then we come to use of an. We come to use of an. Use of an. आन को व्यवहार करा जाए। आन इज यूज्ड बिफोर द सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिगिनिंग विथ ए भावेल। बिफोर द सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिगिनिंग विथ ए भावेल और भावेल साउंड। जदि कौन से सिंगुलर काउंटेबल नाउन रो प्रथम अक्षर गोटे भावेल थाए किंबा भावेल साउंड थाए आन रो व्यवहार करा जाए। ओके, singular countable noun beginning with the letter vowel. That means A, E, I, O or U. An is used. For example, ox. Ox is singular countable noun, so I can say an ox. Similarly,
an eye, an army. This is the an is used. An is used before the singular countable noun and beginning with the letter vowel. Similarly, word beginning with the silent H. Words beginning with the silent H. That means words are the singular countable noun beginning with the H and it is the silent H. Then an is used. For example, silent H means suppose honest man. Honest, honest man. You remember, the first letter is H, but the pronoun is honest or honest. As the pronouns is the vowel pronouns, so an is used. Then I can say an honest man. An honest man. Similarly, I can say half an hour. Hour. H is used. H is used, but pronouns is hour. R. That means vowel pronouns. As it is the vowel pronouns, so an is used. So this is the first. Students, you can mark it. You can mark it. Suppose orange. Suppose orange. 1 rupee note. Orange. Here O is used. Here is also O is used. But this word pronounced as orange or orange. So it is an orange. We can use an orange. Orange रे प्रथम अक्षर वो अच्छी 1 rupee note रे प्रथम अक्षर वो अच्छी किंतु ऑरेंज रा प्रथम अक्षर वोटा अ उच्चारण होची जे कि भावल उच्चारण ऑरेंज और सो आन व्यवहार कराला किंतु ए क्षेत्र रे 1 rupee note रा प्रथम अक्षर वो थिले मध्य उच्चारण वा तेनु ए इज यूज्ड. Similarly, that means though in both words, in both nouns, the O is used. In this case, in orange case, O pronounced as the O, so an is used. O pronounced as the wa, the a is used. Okay. Similarly, umbrella. Umbrella. Suppose umbrella. Unit. Umbrella. Unit. Umbrella unit U. Though here umbrella in the case of umbrella, U is pronounced as or, umbrella or. So an umbrella. But in this case, U pronounced as U, unit, and a unit. Okay. Similarly, suppose in case of egg, in case of egg, in case of European, in case of E, pronounced as egg, A is the vowel pronounced. So E thai madhya E thai am uchchaरण thi egg, a vowel pronounced thibaru seta an egg hobo. Seipari European, same in this case E is the first letter, but this first letter E pronounced as the A, but this first letter E pronounced as the U. So vowel pronounced as U pronounced hocharu अर्थात कॉन्सोनेंट प्रोनाउंस होतारु से व्यवहार करा दिवा ए यूरोपियन. This is the use of a or an. Okay. Now next class we will discuss about the definite article